Start. The respondents maintain that no case for invoking the extraordinary jurisdiction of this court under Article 226 of the Constitution is made out. Stop. The grounds as raised by the petitioner have been controverted. Stop. It is prayed that the writ petition be dismissed with cause. Stop. Mr. M. L. Serene, learned counsel for the petitioners, contended that the state cannot impose tax on the sale or purchase of goods bought or sold in the course of export. Stop. Paddy and rice are special goods. Stop. The distinction between paddy and rice having been obliterated by the Parliament by introducing Section 15, the state was not competent to levy tax on the purchase of paddy as the rice had been sold to the exporter who had a prior order of purchase from a foreign buyer. Stop. He further contended that the legal fiction by which the distinction between rice and paddy has been obliterated has to be given full effect, and thus the impugned notices as well as the orders of assessment cannot be sustained. Stop. It was further contended that in view of the constitutional issues raised in the petitions, the remedy of appeal could not operate as a bar to the maintainability of the writ petition. Stop. According to the learned counsel, even the orders of provisional assessment were wholly arbitrary, as the matter had remained pending with the assessing authority for a long time. Stop. The claim made on behalf of the petitioners was controverted by Mr. Suryakant, Advocate General, Haryana. Stop. He submitted that the action of the authorities was in strict conformity with the law. Stop. The amendment in the Central Act was only intended to benefit the miller who directly exported the goods to a foreign buyer. Stop. It does not afford any benefit to the millers who purchased paddy and sold rice to the exporter. Stop. With regard to the orders of provisional assessment, the council submitted that the petitioners have effective alternative remedies under the Act. Stop. No ground for invoking the writ jurisdiction is made out. Stop. After hearing counsel for the parties, we find that the following two questions arise for the consideration of this court. Stop. Is the purchase of paddy by the petitioner accessible to the levy of purchase tax? Stop. Should the petitioners be relegated to the remedies under the Act in so far as the challenge to the orders of assessment is concerned? Stop. The sale of goods can be intrastate
of or interstate stop when sale or purchase takes place in the course of interstate trade by virtue of the provisions of Article 269. The tax can be levied and collected by the government of India. Stop. However, it has to be assigned to the states in accordance with such principles of distribution as may be formulated by Parliament by law. Stop. Under Article 286, certain limitations have been placed on the power of the state to levy tax on the sale or purchase which takes place in the course of import into or export out of India. Stop. Hi student, डिक्टेशन लिखने के बाद उसको टाइप करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताते हैं। जैसे आप इसमें डिक्टेशन लिख लेते हैं तो इस विंडो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस टाइप से विंडो नजर आएगी। इसमें विंडो के राइट साइड पे स्किप टू ट्रांसक्राइब वाली ऑप्शंस आपको नजर आ रही है, इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको लॉगिन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें लॉगिन नहीं करना है, साइन अप करना है। साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट आ जाएगा। क्रिएट अकाउंट में आपने फुल नेम, ईमेल, ईमेल आप अपनी सही ईमेल डालिए, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। उसके बाद आपकी ईमेल पर वेरीफाई योर ईमेल उसका लिंक ओपन हो जाएगा। इस पे आप जाके क्लिक करें। क्लिक करते ही तो कंटिन्यू की ऑप्शन आ जाएगी। कंटिन्यू पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लॉगिन वाली ऑप्शन आती है, इस पे साइन इन करना है आपको। साइन इन करने के बाद ट्रांसक्राइब हियर वाला विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे टाइमर है, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप टाइम से पहले टाइप कर लेते हैं तो नीचे ऑप्शन है सबमिट अटेम्प्ट, उस पर क्लिक करो, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको सबसे पहले एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेसी से आपने टाइप किया। नेक्स्ट विंडो है फुल मिस्टेक, कितनी मिस्टेक आपने की, हाफ मिस्टेक्स कितनी है, और एरर टोटल कितने हैं और कितने वर्ड आपने टाइप किए। और नीचे आपको ग्रीन में दिखा रहा है, ग्रीन ये जो करेक्ट वर्ड है, रेड वाला जो है आपकी मिस्टेक है। इसके बाद नीचे एरर ब्रेकडाउन वाली ऑप्शन आती है, इसमें आपको सारा डिक्टेशन के बारे में बता रहा है। ओमिट वर्ड्स, मिसिंग वर्ड्स, एडिट वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट वर्ड, ये सब दिखाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है व्यू लीडर बोर्ड की। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको डिक्टेशंस योर परफॉर्मेंस की ऑप्शन दिखाता है। आपका कितना रैंक है और एक्यूरेसी कितनी है, ये जितने भी बच्चों ने इसको टाइप किया वो उनमें आपका रैंक डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद हमारे पास व्यू ट्रांसक्रिप्ट पीडीएफ की ऑप्शंस है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको विद शॉर्ट एंड मैटर जो डिक्टेशन का मैटर है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी आपने डिक्टेशन है इसमें अटेम्प्ट किए हैं उसका विद ग्राफ आपको डिस्प्ले करेगा। थैंक यू।